un value will be given here in our question. Sometimes it is in a nth term form, or sometimes we have to find out nth term separately. Un will be given. We have to go for un plus 1 value from un only. How we are getting? Wherever n is there, we simply replace with n plus 1. Then we are moving to the third step, that is, we have to go for the value of un by un plus 1 value. Okay, and un by un plus 1 value we have to find out, and we apply the limit n tends to infinity on both sides. So if suppose this value will be greater than 1, immediately we can say that the given series is convergent by ratio test. If it is less than 1, then we say that it is divergent by ratio test. Suppose this value is equal to 1. Suppose at x is equal to 1, yeah, whatever. Suppose this test fails. Test fails means that is where it is failed. Suppose at x is equal to 1, test fails. So then what we will do, we have to put this x is equal to 1 in this value, un by un plus 1 value. Okay. If your answer is a improper fraction, then we can move on by using Raabe test. Raabe test में इसमें क्या फर्क है? The extension is un by un plus 1. तो पहले से ही आपके पास रहता, already it is there with you. We have to just subtract -1, and then we have to multiply with n, and then we have to take limit n tends to infinity. And now again, if it is greater than 1, directly convergent, less than 1, directly divergent. Finish. खत्म, इतना ही करना है. ठीक है. ठीक है सर, ये जो लिमिट ये un by un plus 1 इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1 आता है या तो फिर लेस देन 1 आता? अगर दोनों भी नहीं है तो 1 आया तो टेस्ट फेल्स. यस, टेस्ट फेल्स. टेस्ट फेल हुए बाद आपको या तो रेबी टेस्ट से सॉल्व करना है वो प्रॉब्लम को, या तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से करना है वो प्रॉब्लम को, या तो आपको अपना लगाना है लॉगरिथमिक टेस्ट. लॉगरिथमिक टेस्ट बहुत कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, उसमें लॉग वैल्यू आ जाती है, वो आपको मैं बाद में समझाऊंगा. लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का सिचुएशन अराइज हो रहा, सो प्रॉब्लम भी मैं बताऊंगा. टुडे वी आर डिस्कसिंग व्हेन द टेस्ट फेल्स एंड व्हेन वी अप्लाई द रेबी टेस्ट, देन व्हाट हैपन. ठीक है. जी सर. तो ये स्टेप्स मैं रेस कर दे रहा हूँ. देन आई विल मूव ऑन टू द सॉल्यूशन ऑफ आवर गिवन एक्चुअल प्रॉब्लम. Let us see. Solution. What is un? What is un? Tell me. Nth term of this given series. un is equal to summation of n Summation. factorial whole Summation है लिखना बस. Summation, you should not write summation. N factorial whole square by summation itself represent the nth term. So again no need to write summation. Un factorial into x power n. This is un value. Okay. From un we have to find out un plus 1 value. Now from un we have to find out un plus 1 value. So how to find out? Wherever n is there, we put what? Give me the answer. N plus 1 factorial. It is whole square. And this is, yes. So wherever n is there, if you put n plus 1, or how it is becomes? क्या होता बोलिए? It is becomes 2n plus 2. Assalamualaikum sir. Walaikum salam. You are too much late. Yes sir. Okay, no problem. Ratio test. So ratio test में ही Raabe test आता देखिए. Where our next discussion is about Raabe test now. So what I said, जी. Raabe test is the extension of ratio test. So the question is there, this question, we are assuming this is un value,
and we are finding un plus 1 value. Wherever n is there, we replace with n plus 1. And now the third step, जी सर. can you tell me third step? un by UN by un plus 1 plus value. 1. UN plus 1. So this is the first term we जी सर. have in factorial whole square into x power n into x power n divided by 2n factorial as it is. This is 2n factorial multiplied by, we know that fraction by fraction, second fraction will become reverse. So then it is becomes 2n plus Yes, 2 sir. factorial, 2n plus 2 factorial divided by n plus 1 factorial, n plus 1 factorial whole square into this x power n plus 1. I want to split like this, x power n separately, x power 1 separately, and we know that already bases are equal, power should be added. So phone say how Added. many terms are cancelled? This x power 1 will be cancelling with this x power n, right? These are the only terms जी. cancel. और उसके बाद एक फार्मूला यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, बेसिक क्लासेस का फार्मूला, n factorial can be written as n into n minus 1 factorial. n factorial can be written as n into n minus 1 factorial. So देखिए क्या होता Factorial. un by un plus 1 value, it is equal to this n factorial whole square. How to write? n factorial into n factorial. Can we write? And factorial. लिख सकते ना? Yes, sir. जी. जी सर. Divided by this 2n factorial as it is. This 2n factorial as it is. Again, assume this is n factorial form. ये पूरी वैल्यू को n सपोज करके n factorial का फार्मूला अप्लाई करिए. क्या होता बोलो? n into n minus 1. 2n plus 2 जी सर. minus 1 and factorial. n into n minus 1 factorial divided by n plus 1 whole square. n plus 1 factorial whole square can be written as n plus 1 factorial into Into n n plus plus 1 1 into n plus 1 factorial. factorial. सर यहाँ पे n for वो फॉर्मूला फिर से सब्स्टिट्यूट करता ना सर. जी नेक्स्ट सिस्टम में करेंगे into 1 by x. हाँ. Yes, Umair, do you have any doubt? नहीं है Okay. सर मीटिंग में. Okay, okay, no problem. एक स्टूडेंट थे, अभी नहीं है शायद. तो let us continue. un by un plus 1 equals to equal to this n factorial as it is into this n factorial again as it is divided by this 2n factorial into 2n plus 2. 2n plus 2 I am writing as it is. 2n plus 2 I am writing as it is. And if you simplify this, what happened? क्या बचता? 2n, बोलिए, come on, 2n plus 1 factorial 2n plus 1 factorial. divided by, again we assume this is n factorial form, so n into n minus 1 factorial means n plus 1 minus 1 factorial into, फिर से इसको भी n factorial, तो n into n minus 1 factorial into लास्ट में कितना बचा? 1 by x बच गया, as it is we have to write. Clearly? Clear है? Clear है steps? जी सर. ये प्लस 1 माइनस 1 जी. कैंसिल कर दे, यहाँ से प्लस 1 माइनस 1. If you cancel plus 1 minus 1, what is left of? What is left of? Tell me. n factorial left now. जी. Plus 1 n factorial बता रहा n था सर. factorial will be cancelling with this n factorial. Even this n factorial, what is left of, that is cancelling with this n factorial, right? जी सर. This is un by un plus 1 value. Finally, what is left of? It is equal to, here numerator value, both n factorials are cancelled. Here it is left of n plus 2 value.
Okay, and 2n plus 1 value, इसको भी simplify करेंगे अपन. This is 2n plus 2 into, again assume this is n factorial. कैसा लिख सकते हैं? n into n minus 1 फैक्टोरियल सर. factorial, correct? Divided by, जी जी सर. तो फिर सर जरा फैन खोल दीजिए. Divided by 2n factorial, and here n plus 1 left into, here also n plus 1 left, so we can write it as n plus 1 whole square into 1 by x. Is it clear? This question is जी clear. सर. So again what Yes, cancel? sir. Again what cancel? Plus 1 and minus 1 cancelling out. क्या बच गया? 2n factorial. This 2n factorial can be cancelling out with this 2n factorial. Right? जी Right? सर. un by जी. un plus 1 equals to un by un plus 1 equal to, we can take 2 common here. So n plus 1 left here. 2 common n plus 1 left here, into 2n plus 1 and जी divided सर. by, this is n plus 1 whole square. सर उसमें भी 2 क्यों नहीं? हाँ सर ठीक है. मैं होता उधर से common into 1 by x. जी जी जी. This square term, this n plus 1 cancelling out. यस सर. तो क्या बच गया बोलिए? What is un by un plus 1 value becomes 4n plus 4. un plus 1, 4n plus 4 4n plus 4. एक काम कर सकते हैं divided अपन. by n plus 1 into 1 by x. Yes, n plus 1 into 1 by, बोलिए 4. एक काम कर सकते हैं, ये 2 ऐसे ही 4n रहने plus 4. दीजिए. एक काम करेंगे, ठहरिए जस्ट 1 मिनट. ऐसे ही रहने दीजिए स्टेप 2n ओके. plus 1. हाँ, ऐसे विल सी इन द नेक्स्ट स्टेप. Divided by n plus 1 only left ठीक है. here into 1 by x. Clear है ना? जी सर. जी. जी. If I am taking n common here outside n, क्या बचता बोलो? un by un plus 1, it is equal to, if I am taking n common, it is becomes 2n here, and it is becomes 1, sorry, not 1, it is what, 2 plus 2 by n left now, divided by, if you take n common, 1 plus 1 by n. बराबर है क्या? देखिए स्टेप पे. जी सर बराबर है. Yes. So I want to cancel once again what? I want to cancel this n, and this 1 by x must be as it is again. This 1 by x again as it is. So finally, if you apply limit n tends to infinity on both sides, what happened to our problem we can see. ये हो गया next page. Next page. जी सर. That step un by un plus 1, again I am writing un by un plus 1 equal to, यहाँ पे जो लेफ्ट था वो स्टेप यहाँ पे फिर से एक बार आप देख लीजिए. देखिए ये 2 times of 2 plus 2n, 2 times of 2 plus 2 by n, okay, 2 times of 2 times of 2 plus 2 by n divided by 1 plus 1 by n multiplied by 1 by x. Now taking limit n tends to infinity on both sides. Limit n tends to infinity. n tends to infinity. यहाँ तक आपको ऐसा लगा कि कहीं तो भी लिमिट टेस्ट अप्लाई करे बोल के? नहीं सर. नहीं. हाँ, तो इट मींस दैट डिफॉल्ट वर्क कर रहे हैं. डिफॉल्ट वर्क. कंफ्यूजन नहीं आ रहा था. यस. 2 by x कांस्टेंट हो सकता है. लिमिट अप्लाई करे तो 2 by x. We don't have any nth term here ना. यस सर. n tends to infinity. 2 plus 2 by n divided by 1 plus 1 by n. What happened when we apply the limit? What is the answer? 1 by n 2 by 2 sir. 2 is the answer. 2 on outside 2 means we can say that 4 by x left here. Sorry sir.
This 2, हाँ सर, 2 by x into 2 सर, सही है, सही है। that's what. So then 4 by x left. So we should write our statement by ratio test. By ratio test, if 4 by x is, what do you say, greater than 1, if you simplify this, x by 4 less than 1. Further, if you simplify, cross multiply, x is less than 4, then we say that it is convergent. Similarly, another line of this statement, if 4 by x is less than 1, which means that Great. 4 by X by 4 x is by 4 is greater than 1, which implies that x is greater than 4, then we say that it is divergent. Last step, divergent. last line, Yes sir. if 4 by x value is equals to 1, which implies that x is equal to 4, then we say that test fails. Yes. Test fail. Yes. Test fails. Test fails होते कि क्या करते हैं immediately when x is equal to 4, what happened we can see, right? वही है ना, ऐसे ही करें ना, when x is equal to 4, we have to substitute in un by un plus 1 वैल्यू में रखते, ये है आपका प्रीवियस आपका सोल्यूशन। x is equal to 4 कहाँ पे रखना है, x की प्लेस पे 4 रखना है, when n x is equal to 4। अच्छा, अब आपको डाउट आएंगे सर हम x is equal to 4 कहाँ पे रखेंगे, तो जहाँ पे अपन लिमिट अप्लाई करें ना उससे जी पहले सर। वाले स्टेप पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, मैं इसको एक इक्वेशन पे बना के दे देता हूँ आपको, यहाँ पे रखना है, ये 4 यहाँ पे रखना है, ये इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट करना है x वैल्यू 4, मतलब लिमिट अप्लाई करने से पहले, लिमिट ओके अप्लाई सर। n टेंड्स टू इंफिनिटी करने से पहले x के प्लेस पे अगर 4 रखे तो क्या हो जाता, जो हमारे वैल्यू आती है उसमें x इज इक्वल टू 4 रखना है ना। जी जी हो, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 रखे तो क्या होता अपना un by un plus 1 becomes un by un plus 1 becomes when x is equal to 4, this is 2 times of 2 plus 2 by n, ओके 2 plus 2 by n। अच्छा ये काम करेंगे, ये तो अपन n कॉमन लेके भी कैंसिल करें, n भी कॉमन नहीं ले सो स्टेप में रखेंगे ना, n कॉमन नहीं ले सो स्टेप कौन सा है, ये प्रीवियस यहाँ पे हो सकता हो, प्रीवियस पेज में हो सकता हो, कहाँ है, क्या है, देखिए n कॉमन नहीं जी। लिए, देखो ये है आपका इक्वेशन नंबर 1, n कॉमन लेके कैंसिल करें ना, n कॉमन नहीं लिए सो जगह पे रखें, बात समझ गए, ओके। क्लियर है ना, तो जी सर। चल सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 में, तो 2 टाइम्स ऑफ 2n प्लस 2, 2 टाइम्स ऑफ 2n प्लस 2, 2 टाइम्स ऑफ 2n प्लस 1 है, yes, 2 टाइम्स ऑफ un by un plus 1, it is equals to 2 times of 2n plus 1, 2n plus 1 by n plus 1 into 1 by 4, right? अब क्या है, we cancel it out this one, ऐसा 2 1s are, यस सर। 2 2s are 2 cancelling 4 out, कैंसिल। right? ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 2n plus 1 by n plus 1। तो ये स्टेप क्या बन जाता अपने पास, 2n plus 1 by 2n plus 1 by 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए पापा, क्या होता 2n plus 2 हो जाता ना, 2n plus 2। हाँ, तो ये कौन से टाइप का जी फ्रैक्शन सर। है, इस टाइप के फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे अपन, दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर। improper फ्रैक्शन, कैसा बोल सकते हैं, द वैल्यू ऑफ n, द डिग्री ऑफ n इन न्यूमरेटर इज 1, यहाँ पे भी 1 है, n की वैल्यू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर सेम है तो उस टाइप के फ्रैक्शन को बोलते हैं आप प्रॉपर जी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर आया क्वेश्चन जी। अपना तो इमीडिएटली रेबी टेस्ट से इसको सॉल्व करके इसको फिनिश करना, मैं यहाँ से जो भी वर्क कर रहा हूँ वो ग्रीन मार्कर से कर रहा हूँ, इट मीन्स दैट वी आर अप्लाइंग दैट रेबी टेस्ट, रेबी टेस्ट का वर्क
यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अप्लाई रेबी टेस्ट, ओके सर। अप्लाई रेबी टेस्ट। अच्छा, आपको एक छोटा सा क्वेश्चन आना चाहिए, सर अपन यस सर। लॉगरिथमिक टेस्ट से काई को नहीं कर रहे बोल, या नहीं तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से काई को नहीं कर हाँ रहे बोल। तो ये डाउट आपका क्लियर करने के लिए, अगर यहाँ पे अपने को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या प्रॉपर फ्रैक्शन आता, मान लो एग्जांपल 2n² + 2 आता, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर अगर मोर देन न्यूमिनेटर है, तो इसका मतलब दैट इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में vn चूज करके लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से सॉल्व कर दे सकते। अस्तगफिरुल्लाह। उमेर, उमेर, यू आर डिस्टर्बिंग द क्लास। ठीक है सर, म्यूट कर दे रहे। म्यूट कर दो पापा। देखिए, आप वाकई में आप सुनते बोले तो मैं आपको ज्वाइन करो बोल के बोला। सब्ट्रैक्ट 1 ऑन बोथ साइड्स, सब्ट्रैक्ट 1 ऑन बोथ साइड मीन 2n जी सर। + 1। सीरियस क्लास जा रही, थोड़ा भी डिस्टर्बेंस हुआ तो मेरे को डिस्टर्ब होता बाबा। 2n + 2 - 1, and we subtract and simplify. Then if we simplify, 2n + 2 will be the LCM here. 2n + 2 will be the LCM. Here we are getting 2n + 1, and if you multiply with minus sign, we are getting 2n - 2. So finally the answer will be -2 and minus 2n -2। + 2n जी सर। cancelling out. It is -1/2n + 2 left off. -1/2n + 2 left off. क्लियर है ना? क्लियर है? जी सर। तो रेबी टेस्ट हाँ के स्टेटमेंट के हिसाब से वी मल्टीप्लाई n ऑन बोथ साइड्स, un by un + 1 - 1 इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे भी n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -n बाई, डिनोमिनेटर में n कॉमन भी ले लेंगे तो इट इज बिकम्स 2 + 2/n, 2 + 2/n। नाउ दिस n 2/n। cancelling with this n. Now taking limit n tends to infinity on both sides. Limit n tends to infinity, n times ऑन un बोथ by साइड्स। un + 1, un by un + 1 - 1 equal to, this is equal to limit n tends to infinity, infinity -1 by 2 + 2/n. As n tends to infinity, this 2/n becomes 0 now, this term become 0. तो आंसर कितना आ गए? माइनस कॉन्वर्ट्स। 1/2 ऊपर मीन्स लेस देन 1 ना, लेस जी देन सर। 1 है ना। तो वो कौन से टेस्ट से कर रहे थे अपन? बाय हाँ बाय रेबीज टेस्ट, रेबी टेस्ट। सीरीज डाइवर्जेंट। सर हर बार जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता रेबीज टेस्ट ही लगाते हो, जियो और कोई जियो टेस्ट जियो, नहीं? इसलिए तो मैं इतना क्लियरली बोल रहा हूँ ना। और जो हिंट मैं आपको दे रहा हूँ ये कोई भी नहीं देते, पहचानना बहुत मुश्किल है। एक ट्रिक है, वो ट्रिक से पहचान सकते हैं अपन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। बाय रेबी टेस्ट सीरीज, बाय रेबी टेस्ट सीरीज, व्हाट डू यू से? डाइवर्जेंट। लेस देन आए तो क्या होगा? डाइवर्जेंट। तब इसका कंक्लूजन लिख के डाइवर्जेंट। जी सर। प्रॉब्लम को खत्म करेंगे। हेंस 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 गिवन सीरीज, हेंस, इसमें ना ये रेबी टेस्ट में ना गिवन क्वेश्चन थोड़ा बड़े सीरीज। बड़े रहते। गिवन सीरीज कन्वर्जेंट कब हो रही? देखो 4 में, लेस देन में कन्वर्जेंट हो रही। कन्वर्जेंट 4। जी। इफ x is less than 4, and divergent if x is greater than, इक्वल टू में भी करें ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। आयम आप जा रहे तो चल जाओ, मैं लॉक प्रेस करके जाता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, वहां पे लॉक लगा दीजिए, मैं लॉक करके चल जाता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ यस कॉलेज बॉयज। में सर? हाँ कॉलेज में हूँ मैं भी। Yes, boys. From beginning, I will show you the screen. If you want to see, you can see from here. Orally, I will explain. Very, 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 very important question. रेबी टेस्ट का लॉन्ग आंसर कैसा भी बनता बाबा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ 2021 के पेपर में, ये क्वेश्चन था बीई फर्स्ट ईयर के पेपर में। ओके, एक बार शुरू से देख ओके लीजिए। रेबी टेस्ट बहुत बड़ा टेस्ट रहता। इसके बाद मैं, उमेर आज आप इंस्टीट्यूट को नको ऑनलाइन से सुनो, और एक रेबी टेस्ट का क्वेश्चन करा तो मैं। ओके ठीक है सर।
अच्छा हमारे क्या नाम बिलाल, 8 o'clock is the comfortable जी time सर। for you? 8 o'clock? 8 o'clock ब्रो, बस हाँ 7:30 से है। बस 7:30 से 8:30 से। बस 8:30 से कब तक? 8 से। सर ठीक है, 8:30 थोड़ा प्रेफरेबल रहता क्योंकि 8 से मैं स्टार्ट होता सर। 8:30, 8:30 ना? जी सर, क्योंकि 8 o'clock से मैं स्टार्ट होता। जी सर, 8:30। बेस्ट क्या है? मैस मैस खाना। अच्छा मेस बोल रहे हैं। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो एट जी सर। थर्टी से ही क्लास रखेंगे, एक और क्लास अपनी ऑनलाइन से। मे बी इन इवनिंग आई विल टेक टू जी। 40-40 मिनट सेशंस। हाँ, ये 40 मिनट्स का सेशन हाँ शायद सर। अभी हाँ सर। अभी 4-5 मिनट में हो जाएगा। एक बार मैं ओरल एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, एक बार शुरू से देख लीजिए। What is the question here? Nature of the series. जी सर। In our question, nowhere it is mentioned that we have to apply Rabi test, ratio test, logarithmic test, Cauchy's integral test. कुछ भी हिंट नहीं दिया, मगर मैं आपको एक ट्रिक क्या दिया। क्वेश्चन में अगर फैक्टोरियल वाले टर्म्स दिख रहे तो इसका मतलब ये है कि यू हैव टू अप्लाई रेशियो जी। टेस्ट ओनली। तो ratio test. Summation value means UN value. This ओके। is your UN value. Now from UN, we have to find out UN plus 1. जी How? सर। Wherever n is there, we are replacing with n plus 1 only. Okay, now we got it UC. After that, if you simplify n factorial whole square, we are going to write, अच्छा या no, sorry, यहाँ पे UN by UN plus 1 है. UN value is here, UN plus 1 is here. Fraction by fraction, we are taking second fraction as a reciprocal. This 4n will be cancelling out. N factorial whole square, n factorial into n factorial, this one as it is. 2n plus 2 factorial को n factorial वाला फार्मूला अज्यूम करके यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन में। सॉरी, यहाँ पे कुछ स्क्रीन और सॉरी। हाँ, तो n फैक्टोरियल वाले फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई करें अपन। इसमें इसमें अप्लाई करें, देखिए इधर ये फार्मूले को इधर अप्लाई करें। n फैक्टोरियल, n factorial can be written as n into n minus 1 factorial, n into n minus 1 factorial. तो दिस 2n plus 2 as it is, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 2 plus 2 minus 1 is plus 1। उसके बाद फिर डिनोमिनेटर में भी सेम फार्मूला अप्लाई करें, n फैक्टोरियल n into n minus 1 factorial, plus 1 minus 1 plus 1 minus 1 कैंसिल, यहाँ बच गया n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को भी n फैक्टोरियल से कैंसिल कर दिया। देन 2n plus 2, दिस वन एज इट इज, दिस वन एज, फिर से अज्यूम करेंगे n फैक्टोरियल वाला फार्मूला यहाँ पे। इसको फिर से n फैक्टोरियल वाले कॉन्सेप्ट में जाएंगे। इट इज बिकम्स अगेन n into n minus 1 factorial into n minus 1 factorial। जी तो सर। उसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, 2n फैक्टोरियल लेफ्ट है उसको मैं फिर डिनोमिनेटर वाले 2n फैक्टोरियल से कैंसिल कर दिया। अब आप ये स्टेप में आके देख सकते हैं फैक्टोरियल वाले टर्म्स है ही नहीं, टोटली कैंसिल हो गए जी हैं, सर। नहीं है। तो फैक्टोरियल वाले टर्म्स जहाँ से कैंसिल होते कि थोड़ा सिंप्लीफाई करके इक्वेशन नंबर 1 ले लेते। फिर अप्लाइंग लिमिट इंटेंस टू इंफिनिटी करने के लिए वी आर टेकिंग n कॉमन एंड कैंसिलिंग n एंड देन अप्लाइंग द लिमिट। लिमिट अप्लाई करें, यहाँ पे देखिए स्टेप में लिमिट अप्लाई करें, देन वी आर गेटिंग सम आंसर। व्हाट इज द आंसर? 4/x। 4/x, इट इज neither convergent nor divergent, दिस इज बिकॉज इट इज नॉट लेस देन 1 नॉट ग्रेटर देन 1। तो रेशियो टेस्ट का स्टेटमेंट लिखना, by ratio test, if this series is whatever the term greater than 1, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, 4/x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 4 कन्वर्जेंट। आप यहाँ पे भी ऐसा भी लिख सकते हैं कि 4/x इज ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट, 4/x लेस देन 1 डाइवर्जेंट, 4/x इज इक्वल टू 1 टेस्ट फेल, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये बाकी के स्टेप्स ऑप्शनल है आपके समझने के लिए है खाली। तो अब x इज इक्वल टू 4 पे अपना टेस्ट फेल हो रहा, x इज इक्वल टू 4 ले जाके जहाँ अपन इक्वेशन नंबर 1 बनाए वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ से फिर आपने को कैसा पता चलता कि ये देखिए फ्रैक्शन 2n plus 1 by 2n plus 2, ये ऐसा फ्रैक्शन आ गया, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ से अपन क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को रेबी टेस्ट अप्लाई होता है। ये बहुत बड़ा मैं आपको शॉर्टकट दे दे रहा हूँ, हिंट दे दे रहा हूँ कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को रेबी टेस्ट अप्लाई करना है। ठीक है, और लॉगरिथमिक टेस्ट कब अप्लाई करना है? जब इसका आंसर ई बोल के स्टॉप होता, e/x, e² by 2, कुछ तो भी ई में आंसर आना, ई में आंसर आया तो लॉगरिथमिक टेस्ट। अगर ये आपको प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से सॉल्व करना। अब डिफरेंस क्या है? -1 सब्ट्रैक्ट करना, n से मल्टीप्लाई करना, लिमिट अप्लाई करना, वो 3 काम करें यहाँ। -1 वी आर सब्ट्रैक्टिंग, n वी आर मल्टीप्लाइंग, वी आर टेकिंग n टेंड्स टू इंफिनिटी लिमिट। So we are getting our answer is what? Less than 1.
then by Rabi test we can say that this series is divergent. अब डाइवर्जेंट बोल के क्या बोल रहे हैं अपन, इक्वल टू 4 में भी डाइवर्जेंट बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या बोले अपन, ग्रेटर देन 4 को डाइवर्जेंट बोले, लेस देन 4 को डाइवर्जेंट बोले। पर यहाँ पे एक और स्टेप अपन ऐड क्या करना है, इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू 4 में भी डाइवर्जेंट हो रहा। इसका अगर फाइनल मीनिंग देखे तो अगर ये क्वेश्चन को अगर अपन देखे, जहां भी ये एक्स है, एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 4 आ रही है, यहाँ x जो भी एक्स रखेंगे तो ग्रेटर देन 4 आ रही, तो ये पूरा जो nth टर्म है वो डाइवर्जेंट हो जाता। और यहाँ पे x की वैल्यू अगर लेस देन और इक्वल टू 4 रखे तो ये पूरा nth टर्म जो है वो कन्वर्जेंट हो जाता। ऐसा ये प्रॉब्लम का इमेजिनेशन है, ऐसा रहता। कहीं भी इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री कुछ तो भी आ रहा है, बोलो आप मेरे को, यार है ना। जी सर। ट्रिग्नोमेट्री कहीं तो भी यूज करे, डेरिवेटिव का फार्मूला कहीं तो भी यूज करे, नहीं सर, इंटीग्रेशन का नहीं करा। फार्मूला कहीं तो भी यूज करे, नहीं यूज करे। नहीं वेरी सर। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट रहता है, सीक्वेंस एंड सीरीज। और इसमें सब जने कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं, कौन सा टेस्ट कब अप्लाई करना। मैं उसके लिए जो हिंट दे रहा हूँ ना, अब इसकी रिकॉर्डिंग में भिजाता हूँ, आप रिकॉर्डिंग में सुन लीजिए मैं क्या बोला हिंट उसमें। रिकॉर्डिंग में एक बार जाके फिर से एक बार, जो लेट ज्वाइन करे सो वाले फिर से रिकॉर्डिंग सुन लो, जो बीच में क्लास स्किप करे उन्होंने भी एक बार रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। अब दोनों को मैं रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ। Now the class will be going to end in less than 3 minutes. So let me stop the class. Again, we have a class exactly by 8:30. Please do not delay. 8:30 को मैं मीटिंग स्टार्ट कर देता हूँ इंशाल्लाह। ओके सर। Okay, done. डन सर। Thank you both of you. सर अब क्लास इवनिंग में रहेगी? जी हाँ, इवनिंग में रहेगी अब, ठीक है। मतलब वो 8:30 को ना? 8:30 को रहेगी अभी, जी राइट। सर, ओके।